my dear students. Today I am going to start inverse trigonometric functions, which is very crucial topic. Trigonometric functions you have studied, but now it is inverse trigonometric functions. So for this, it is important to note down all the concepts and formula of class 11, which we will use here. These inverse trigonometric functions are very important for differentiations and integration also. My dear students, we have already studied what kind of functions are invertible. Now let us see the behavior of trigonometric functions for invertible cases. So children, let's start inverse trigonometric functions. You know this word inverse. Inverse of functions we have studied in previous chapters. What we know? We know that the functions which are bijective are only invertible. You have already done so many questions of invertible functions. You have done the functions which are bijective. What is bijective? Bijective means what? 1 on 2, right? You also know this. Then that functions are invertible. The cases of invertible functions and how to find the inverse, that also you have done. Now let's understand what is in the case of trigonometric functions. See, if I write sin x, if I write fx is equal to sin x, fx is equal to sin x, if I write this trigonometric functions, and what is f? And if I write f is from what? F is from df, means domain of the function, to we know that -1 to 1. Range of sine function is -1 to 1, that we know. Sine function, I am talking about sine function. Later on I will discuss about its inverse. Then df means domain से ही होता है. Domain क्या है sine function की? Domain is R. Domain of this sine function is all real numbers and the range is -1 to 1. Because see what I am going to take here, it means I am going to take this function on 2. Now let us try within its domain is this 1. Let us see this. See in R, suppose I write, if I write x is equal to pi by 6, that is what? 30 degree. Then what is sine 30 degree? Sine pi by 6 is equal to 1 by 2. And if I write x is equal to, what do I write? If I write x is equal to 5 pi by 6, this is 150 degree. What is this? This is again sine pi minus pi by 6. This I can write, this is equal to sine 5 pi by 6, and this is equal to sine pi by 6. How much? 1 by 2. This is 1 by 2. Means sine 50 is 1 by 2, sine 30 degrees 1 by 2. Similarly, if I write x is equal to 45, what do we write? 45 pi by 4. What is sine pi by 4? Sine pi by 4 is how much? This is 1 by root 2. And similarly, sine, if I write x is equal to 135, this is 3 pi by 4. So sine 3 pi by 4 is also 1 by root 2. Fine. Both are 1 by root 2, means this is not 1. Sine function is not 1 from its domain to its range. So now if this is not 1, how can we talk for its invertible cases? This is many one. I think you can understand this. For 2 values of x, there is 1y. Like see, I can figure out this also. For 2 values, if I write here pi by 6 and I write 5 pi by 6, then what will be here? Here 1 by 2. If I write, both these will map to 1 by 2. That's why this is not 1. So if this is not 1, how can it be invertible? That is a very big issue. So let's try where it is invertible. Let's try. Fine. I hope you have understood this. Now if I restrict this function, this domain from minus pi half to pi half, why do I restrict? See, look here. How can I restrict? If I go for its graph,
See, if I look for the graph of sine function, sine 0 is 0, sine pi half is 1, sine pi is 0 this way, and sine this way it is pi half, it is pi, and here it is minus pi half, then minus pi, and so on. So this will be up to minus 1 and again turn back. So from this graph, the behavior of the graph, if we study the behavior of the graph, see, look here, this is minus 1 and this is 1. If I go from 0 to pi, 0 to pi में अगर मैं चाहती हूँ तो ये साइन फंक्शन क्या कर रहा है, जो वैल्यू यहाँ पर है वही y की, यहाँ देखो ये वैल्यू रिपीट हो जा रही, सारी वैल्यूज रिपीट हो जा रही. और दूसरा, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो क्या कर रही है ये इस कर्व को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है. दैट्स वाई दिस इज नॉट 1 1. एंड इफ आई लुक ओनली फॉर दिस पोर्शन, अगर देखो सिर्फ इतने से पार्ट को देखा जाए, कितने पार्ट को, इफ आई गो फॉर माइनस पाई हाफ से पाई हाफ वाला पार्ट अगर साइन फंक्शन का देखते हैं, ये माइनस 1 है तो ये माइनस 1 से होते हुए प्लस 1, मतलब क्या है, देखो अपनी पूरी रेंज को भी कवर करता है. और ये अब कहीं पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट विल इंटरसेक्ट द कर्व ओनली वंस, चाहे आप यहाँ से ड्रॉ करें चाहे आप यहाँ से ड्रॉ करें. सो दैट्स वाई दिस इज 1 1. नाउ लेट्स सी why it is 1 1, how what will be the behavior of inverse function. So in this case, if what I said, if I write f is from minus pi half to pi half to minus 1 to 1, if I restrict this function here, then this is 1 1 on 2. Now this is what, now this is bijective, this function will become bijective, hence invertible, hence sine function will be invertible. This is very crucial, this proof. You can do the same thing for other functions. Now how I will write, see, look here how I am going to write it. I will write y is equal to sine x, already you know that y is equal to sine x. See children, you know this. How can I find then y is equal to sine x? This will give me x is equal to sine inverse y, and x is f inverse y. F inverse y is equal to sine inverse y. Then what is f inverse x? Then f inverse x is equal to sine inverse x I can write. ये मैंने आपको बताया है. This is y now. fx is equal to, now what is the domain of this function? इसकी डोमेन क्या होगी, जो इसकी रेंज है, जो साइन फंक्शन की रेंज है, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की डोमेन जो होगी, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन होगी, और जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज होगी. मतलब व्हाट आई वांट टू से यू, सी लुक हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. अगर मैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिखती हूँ, इफ आई राइट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इट्स डोमेन, बस यहाँ पर ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डोमेन तो -1 से 1 हो जाती है. एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस पाई हाफ टू पाई हाफ. ऑल राइट, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ लेट मी टॉक अबाउट cos inverse x. Similarly, अगर मैं cos in, please make a note of this. This is very important. If I talk about cos x, see, बिल्कुल ऐसा ही cos x है. अगर मैं y is equal to cos x लिख देती हूँ तो क्या होगा, cos x भी this, इसको f x लिख दो. f is from, suppose f is from its domain to -1 to 1. अब डोमेन cos फंक्शन की डोमेन क्या होती है? डोमेन ऑफ cos फंक्शन इज all real numbers and the range is -1 to 1. In this case, देखो इस केस में क्या होता है कि cos, देखो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है. मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के जितने भी होंगे, लाइक सपोज cos पाई बाय 6, cos 30 इज इक्वल टू हाउ मच, √3/2. देन cos 2 पाई माइनस पाई बाय 6. If I write cos 2 pi by, this not sine, this is cos 2 pi minus pi by 6, this is again cos pi by 6, क्योंकि ये कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया. फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो √3/2. एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज cos 11 pi by
6, मतलब cos 11 पाई बाय 6, पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2. सो दिस इज नॉट 1 ऑन टू का केस तो वी आर ऑलरेडी कंसिडरिंग, हम उसकी रेंज ले ही हो रहे हैं, रेंज और कोडोमेन को सेम ले रहे हैं, इसलिए ये ऑन टू तो है. आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट इट्स 1 सो अगेन दिस इज नॉट 1. नाउ व्हाट टू डू फॉर inverse of cos functions? Let us see what I am doing for inverse of cos function. I will check this again with the help of graph. See, look here, if I draw the graph, cos 0 1 होता है, this is 0, cos 0 is 1, cos pi is how much, 0, and cos pi, ये pi half है, cos pi half is 0, cos pi 180 कितना होता है, -1. तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ cos फंक्शन. अब देखो, अब जब आप ये माइनस कितना है, ये माइनस पाई हाफ है, cos माइनस पाई हाफ भी 0 होता है. देन यहाँ पर अगर इस रेंज में देखो माइनस पाई हाफ से, अगर मैं माइनस पाई हाफ से पाई हाफ के बीच में ये इफ़ आई ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये 2 पॉइंट्स पे इसको इंटरसेक्ट करेगी. मीन्स यहाँ पर ये क्या नहीं है, यहाँ पर तो ये 1 नहीं है. अब यहाँ 1 नहीं है तो कहाँ है, देखो साफ साफ इस ग्राफ से हमें दिख रहा है, व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ. अगर मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ, कहाँ, पाई तक, अगर मैं 0 से पाई तक चली जाती हूँ, तो ये 1 से लेकर के, यहाँ 0 है, 1 से लेकर के पाई हाफ तक, वो 1 से 0 से पाई हाफ तक, 1 से 0 तक की वैल्यू ले लेगा. फिर यहाँ से -1 तक की वैल्यू कहाँ ले लेगा, यहाँ ले लेगा पूरी. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ले ली इसने पॉजिटिव वैल्यू, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसने सारी नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली. मीन्स इस पार्ट में ये क्या हो गया, 1 हो गया. ऑन टू तो पहले ही था, इस पार्ट में ये 1 हो गया. सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन फॉर कॉस इनवर्स फंक्शन? सी, इफ आई राइट y is equal to cos inverse x, where I was restricted, I said I will restrict myself. What will be the domain? इसका डोमेन क्या होनी चाहिए थी, ये डोमेन क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 0 to पाई. ठीक है, तो कॉस इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, जो इसकी रेंज है -1 to 1. एंड व्हाट विल बी रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज 0 to पाई. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. I will talk about 10 function also. Let us discuss about 10 function. See, look here, मैं 10x की आपको ग्राफ बताती हूँ. अगर y is equal to 10x आपके पास लिखा होता है, देन इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है f is from df to r. I think you know that इसकी रेंज पूरी r होती है, और df कितनी होती है, 2n पाई माइनस पाई हाफ. सारे जहाँ पर पाई हाफ है, आर माइनस पाई हाफ ही लिख सकते हैं आप, n पाई हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर क्या होता है 10 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मीन्स कॉस एक्स जहाँ पर पाई हाफ, 2n + 1 पाई हाफ लिख देते हैं इसको. बेटर इज व्हाट डू आई राइट, 2n + 1 पाई हाफ. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हाफ अगर मैं लिख दूँ इसको, r minus this is better. r minus 2n + 1 पाई हाफ मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हाफ. उन सारे पार्ट्स में कॉस फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो कॉस फंक्शन वहाँ पर 0 हो जाएगा. ये पार्ट हमें ओमिट करने पड़ते हैं. लेट अस सी द ग्राफ. अब आपको ग्राफ आता होगा, 10 क्या होता है, 10 फंक्शन अगर ये माइनस पाई हाफ है और ये पाई हाफ है, तो क्या करता है, ये इन्फिनिटी से आता है और इन्फिनिटी को चला जाता है. ठीक है, मीन्स माइनस पाई हाफ से पाई हाफ में, ये ग्राफ से आपको लग रहा है कि एक्स एक्सेस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये कभी भी ये क्या होगा, ये कर्व को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट नहीं करेगा. चाहे आप यहाँ ड्रॉ करें, चाहे यहाँ ड्रॉ, कहीं भी ड्रॉ कर लें एक्स एक्सेस के पैरेलल, तो ये कर्व को एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा. ये इस पार्ट में यहाँ से यहाँ तक पूरी नेगेटिव वैल्यू ले लेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये सारी पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा. सो लेट अस टॉक अबाउट दिस 10 इनवर्स फंक्शन. इफ आई राइट y is equal to 10 inverse x, 10 inverse x, what is the domain of this function? इसकी डोमेन तो ये है, क्या है, r.
ठीक है. एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? इसकी रेंज जो होती है -π½ टू π½ होती है. साइन फंक्शन की जो रेंज है वो किस फंक्शन की होती है? tan इनवर्स x की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x दोनों की जो रेंज होती है वो सेम होती है एंड डोमेन दोनों का अलग अलग होता है. दिस रेंज इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच. इनको इन सबको क्या बोलते हैं? ये सारी प्रिंसिपल ब्रांच हैं. सो यू हैव टू लर्न दीज ऑल. ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी tan इनवर्स x की डोमेन. और देन सिमिलरली विल गो डू अदर फंक्शंस. So here I have written all the functions, trigonometric functions, even inverse trigonometric functions, their domain and range. These ranges are only principal branches. Dear students, pause this video and make a note of this. These are very important. Whole the inverse trigonometry will depend only on these. Otherwise, you know that I had already discussed the trigonometric functions will be invertible only for these cases. That's why learn these all. Make a note of this. Pause this video.